Let us see the next question. K Limited currently operates from 4 different buildings and wants to consolidate its operation into one building, which is expected to cost rupees 90 crore. The board of K Limited had approved the above plan, and to fund the above cost agreed to avail ECB. ECB का मतलब क्या होता है? External Commercial Borrowing of 10 million Great Britain pound from G Bank Ltd on the following conditions. The loan will be availed, that is, loan will be taken on 1st of April 2019 with the interest payable with half yearly rest. Next, average loan maturity life will be 3.4 years with overall tenure of 5 years. वैसे 5 साल है, but weighted average it is 3.4 years. Upfront fees is 1.2%. Interest cost of Great Britain pound 6 months LIBOR plus margin of 2.5%. In a way that say हमको 6 महीने का rate of interest दे रखा है, say 6 months LIBOR plus 2.5%. The 6 months LIBOR is expected to be 1.05%. So you can use a calculator. It is 2.5 plus 1.05. The total interest rate would be 3.55%. plus 1.05. K Limited also entered into pound rupees hedge at 90 rupees per pound to cover the exposure on account of the above external commercial borrowing loan, and cost of the hedge is 4% per annum. As finance manager, given the information and taking 90 rupees per UK pound, calculate the overall cost both in percentage and rupees term on an annual basis. What is the cost of hedging in rupees term? If K Limited wants to pursue an aggressive approach, what would be the net gain or net loss for K Limited? If rupee depreciates or appreciates against pound by 10% at the end of the 5 years, assuming the loan is repaid in pound at the end of the 5 years. Question में दे रखा है that say ignore time value of money, tax and calculate up to 2 decimal points. चलो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गो थ्रू करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो let us have understanding of the question. The question is providing the information in this way. There is an Indian company called K Limited. उनको 90 करोड़ यानी कि 9,000 lakhs का लोन चाहिए. उसके लिए वो यूके पाउंड में लोन लेने वाले हैं फॉर 10 million यूके पाउंड. 1 million is equal to 10 lakhs. So 10 million is equal to 100 lakhs. एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 90 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 3.55%. जो भी कंसल्टेंट है या लोन प्रोसेसिंग चार्ज है वो होता है 1.2%. हेजिंग का खर्चा दे रखा है 4% पर एनम. उसके अलावा हमको अपफ्रंट फीस का इंफॉर्मेशन दे रखा है, इट इज 1.2%. इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना है. सारे के सारे कैलकुलेशन 2 डेसिमल में करने हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है व्हाट इज द दैट इज कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट बोथ इन परसेंटेज टर्म एज वेल एज इन रुपीज टर्म ऑन एनुअल बेसिस. यानी कि हमको परसेंटेज टर्म में और रुपीज टर्म में ऑन एनुअल बेसिस कैलकुलेट करना है से कॉस्ट. दैट इज अ क्वेश्चन. सो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू डू आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं. दैट इज द क्वेश्चन सेज दैट से कंप्यूट द ओवरऑल कॉस्ट बोथ इन परसेंटेज and the rupees term on an annual basis. That is a question. Chalo, I request all of you to write down answer along with me.
Working note number 1, calculation of upfront fees. Dear students, we understand that say definitely that say जो upfront fees होता है वो one time ही होता है. So we understand that say the upfront fees is required to be paid one time only. It is 1.2%. That is the loan amount into upfront fees percentage term. That is rupees 9,000 lakhs into 1.2%. That comes to rupees 108 lakhs. ऐसा करके हम लोग अपफ्रंट फीस का कैलकुलेशन कर सकते हैं. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of interest and hedging cost over the time period. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्लस हेजिंग कॉस्ट. देखो यहां पे हमको लोन अमाउंट दे रखा है 9,000 लैक्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3.55%. उसके अलावा हमको हेजिंग कॉस्ट दे रखा है 4%. उसको क्या किया जाएगा, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज इनटू टाइम पीरियड. यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इट इज 0.0355 प्लस 0.04 यानी 7.55% का खर्चा. 9,000 इंटू 7.55%, दैट इज 679.5 lakhs into 3.4 years. That comes to 2310.30 lakhs. यानी ये इंटरेस्ट का खर्चा हो गया. उसके अलावा से दिस इज द अपफ्रंट फीस एक्सपेंसेस. चलो नाउ आई वांट यू टू कैलकुलेट द आंसर. दैट से ये जो लॉस दैट इज कॉस्ट हमको परसेंटेज में पूछा वो क्या होगा, उसका आंसर कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डालिए. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि आंसर कैसे किया जाएगा. फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड इट्स स्कूल टाइम में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है दैट से हमको क्या करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना है. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव. सो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इंटरेस्ट दैट इज ओवर हियर वी अंडरस्टैंड. इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट लिखना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट हमारे एग्जाम्पल में कितना है, इट इज 2310.30 lakhs प्लस दिस इज 108 lakhs. प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 9,000 lakhs minus we understand that say this is 108 lakhs. Because we understand that say we are required to make the payment of the fees upfront, that is the reason. Into R जो हमको पता नहीं है, into क्या किया जाएगा 3.4 years, ऐसा किया जाएगा. What I want to tell you friends is that say we are required to make the computation of the cost in the annualized term. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, into 3.4 years करेंगे. That is the way we are required to make the calculation of answer. यानी यहाँ पे R का कैलकुलेशन कैसे होगा, it is 2310.30 plus 108, that comes to
2418.30 lakhs divided by, we understand that's over here 9000 minus 108,8892 lakhs into 100 into 1 divided by 3.4, because we understand that से जो फीस है 109 lakhs वो upfront पे करने का है. So 2418.30 divided by 8892 into 100 divided by 3.4 years, that comes to 8%. That an answer? Now first part of the question में हमको आगे क्या पूछा है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट इन परसेंटेज टर्म, तो वो 8% आंसर आ गया, एंड ऑल्सो इन रुपीज टर्म ऑन एनुअल बेसिस, दैट इज द क्वेश्चन. तो अभी मैं आगे लिख रहा हूँ, रिटर्न आंसर अलॉन्ग विथ मी, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट इन रुपीज टर्म, उसका कैलकुलेशन हमको करना है. तो फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर, दैट्स उसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है. वी ऑलरेडी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट. इट इज 2310.30 lakhs, that is this amount, plus 108 lakhs divided by 3.4 years. So 2310.3 plus 108 divided by 3.4, that comes to rupees 711.26 lakhs. ऐसा करके इसका कैलकुलेशन किया जाएगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रुपीज टर्म, दैट इज द क्वेश्चन. चलो लेट अस आंसर द सेकेंड क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रुपीज टर्म. तो हम लोग रुपीज टर्म में उसका कैलकुलेशन करेंगे. वी अंडरस्टैंड एट से जो हमने लोन लिया है इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 9000 lakhs, और रेट ऑफ दैट इज द हेजिंग का कॉस्ट हमको दे रखा है, so it is 4%. So 9000 into 4%, that comes to rupees 360 lakhs. This is what we understand is, say, the per annum cost. In total hedging cost, 360 into 3.4, that is rupees 1224 lakhs. Get on the answer. Now third part of the question में दे रखा है, if the K Limited wants to pursue an aggressive approach, what would be the net gain or loss for the company if Indian rupee depreciates or appreciates against pound by 10% at the end of the 5 years. यानी कि 5 साल के बाद पाउंड करेंसी में एप्रिसिएशन आता है या डिप्रिसिएशन आता है एट द रेट ऑफ 5%, और हमने हेज नहीं किया, देन इन दैट केस हमको क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, दैट इज द क्वेश्चन. चलो थर्ड क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस
in rupees term, comma, with exchange rate changing. तो देखो पाउंड करेंसी में there is a gain और पाउंड करेंसी इज से रिड्यूसिंग. चलो आई वॉन्ट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि अगर पाउंड करेंसी में गेन आता है और अगर हमने हेज नहीं किया है तो हमको नेट कितना फायदा होगा या कितना लॉस होगा. राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज. चलो लेट अस सी कि कैसे होगा. सपोज कि पाउंड करेंसी गेन होता है, then in that case loss in repayment. See what will happen, we understand that say जो 100 lakhs of पाउंड करेंसी का हमको पेमेंट करना है, से दैट 100 lakhs of पाउंड में हमको नुकसान होगा. 100 lakhs इंटू 90 इंटू 10%, यानी 9 रुपए का नुकसान होगा. So in that case there is a loss of 900 lakhs. उसके सामने we will be having say the savings of cost of hedging. hedging का खर्चा हमारा बच जाएगा. So that is an amount of 360 lakhs. So there is a net loss, profit or loss. In that so there is a loss of 540 lakhs. ऐसा किया जाएगा. If at all pound currency is like losing, then in that case हमको क्या फायदा होगा? We will be having say the gain in repayment. We will be having say the gain in repayment. Amount same रहेगा 900 lakhs. There would be another savings of the cost of hedging 360 lakhs. So कुल मिला के हमको फायदा कितना होगा? It is 1260 lakhs. That is the amount of the gain. That is answer. चलो let us revise the entire answer. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि एक इंडियन कंपनी है से जिनको 9000 lakhs का लोन चाहिए. The amount is provided to us as say 9000 lakhs, that is 90 crore rupees का उनको लोन चाहिए. वो लोग पाउंड करेंसी में बोरो करने वाले हैं. They are going to borrow 10 million pound. तो मैंने क्या किया, सबको लैक्स में कन्वर्ट कर दिया. 9000 lakhs का लोन है और हम लोग 100 lakhs पाउंड का लोन लेंगे. ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ द रीपेमेंट है 5 साल, बट एवरेज लोन मेच्योरिटी इज 3.4 years. इन अ वे दैट्स द वेटेड एवरेज हमने कैलकुलेशन करके हमको दिया है. यहाँ पे हमको अपफ्रंट फीस पे करना पड़ेगा, मे बी टू द बैंक और मे बी टू द पर्सन हु मेक्स अरेंजमेंट ऑफ द एंटायर लोन. दैट इज 1.2%. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 3.55%, दैट इज 2.5 प्लस 1.05. और हेजिंग का कॉस्ट हमको दे रखा है, इट इज एनुअली 4%. पहला क्वेश्चन हमको ऐसा पूछा है कि आपको कैलकुलेट करना है what is the overall cost in percentage term and rupees term on annual basis. तो परसेंटेज टर्म में भी पूछा है और रुपीज टर्म में भी पूछा है एनुअल बेसिस में. एकदम आखिरी में हमको दे रखा है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आपको अपने कैलकुलेशंस 2 डेसिमल पॉइंट तक करने हैं. तो सबसे पहले हमने अपफ्रंट फीस कैलकुलेट किया, दैट इज इन रुपीज टर्म. इट इज 9000 lakhs into 1.2%. उसके बाद हमने इंटरेस्ट और हेजिंग का कॉस्ट कैलकुलेट किया ओवर द टाइम पीरियड. इट इज लाइक द लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसमें हेजिंग कॉस्ट भी ऐड किया. सो 7.55% ऑन 9000 lakhs is 679.5 lakhs into 3.4 years. सो कुल मिला के खर्चा हो जाएगा 2310.30 lakhs. I is equal to PRN upon 100. That is the simple formula that we have. इंटरेस्ट में फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, टोटल इंटरेस्ट हम लोग पे करने वाले वो
प्लस जो हमको अपफ्रंट फीस पे करने का वो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल में हमने दैट इज मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, इट इज 9000 माइनस 108 आर डिवाइडेड बाय 100, दैट इज से गेटिंग द आंसर इन परसेंटेज टर्म। और टाइम पीरियड में मैंने लिखा है 3.40 ईयर्स, क्योंकि ये जो खर्चा है वो ओवर द टाइम पीरियड 3.40 ईयर्स का है, तो यहाँ पे भी 3.40 ईयर्स लिया जाएगा टू कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज टर्म, दैट इज इन एनुअलाइज्ड टर्म। तो न्यूमरेटर इज एक्सपेंस, डिनोमिनेटर में इतना अमाउंट मिला है, इनटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज टर्म, इनटू 1 डिवाइड बाय n, द आंसर इज 8%। ऐसा करके हमने यहाँ पे 8% का कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट, उसको हमको रुपीज टर्म में भी कन्वर्ट करना है। जो टोटल खर्चा है उसको डिवाइड किया विद नंबर ऑफ ईयर्स, दैट कम्स टू 711.26 lakhs। ऐसा करके इसका कैलकुलेशन किया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रुपीज टर्म कैलकुलेट करना है, दैट्स वेरी सिंपल। जो लोन अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी हेजिंग का कॉस्ट 360 lakhs, और इन टोटल ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 3.4 years, that is 1224 lakhs। ऐसा करके हमने इन टोटल कैलकुलेशन किया है। गेन और लॉस इन रुपीज टर्म, अगर इंडियन कंपनी ने हेजिंग नहीं किया है और 5 साल के बाद पाउंड करेंसी एप्रीशिएट होता है और पाउंड करेंसी डिप्रीशिएट होता है। अगर पाउंड करेंसी एप्रीशिएट होगा तो 100 lakhs ऑफ पाउंड को रीपे करने के लिए 90 की जगह आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, यानी पर पाउंड आपको 9 रुपए का नुकसान होगा। 100 lakhs इंटू 9, ऐसा करके आपको नुकसान कितना होगा, 900 लाख का। अगर पाउंड करेंसी डिप्रीशिएट होता है तो वही 900 लाख को आपको गेन होगा। ऑफ कोर्स आप हेजिंग नहीं करवाएंगे, देन इन दैट केस आपका हेजिंग का खर्चा बच जाएगा। एंड दिस इज द नेट प्रॉफिट और लॉस दैट यू विल हैव।